Hi everyone. In my yesterday video, one of the student commented that he have completed the syllabus, but he is unable to solve the question, and as there is time constraint, so he want a solution for the same. So for him, I am making this video. So what the solution is? So as I said, if you have completed the syllabus, so now for 1 month, so I mean for next 28 days, so you need a lots of practice regarding the question of past paper or the whatever the material that you are following right now. So what I will suggest, yeah, it's true, in the initial when you start practicing the question you will feel challenging, because as we know that स्टार्ट में क्या होता है ना कि जब कुछ चीज सीख रहे होते हैं तो उस टाइम हमको टाइम ज्यादा लगती है. So it is time consuming in the start when we are just starting the new things, right? But with the passage of time, when we become familiar with the concept and the technique that are involved in the question practice, we got to, with the passage of time we take a less time as compared to the initial one. So आपका एक ही सॉल्यूशन है, आप प्रैक्टिस करते जाओ. स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, आई कैन एक्सेप्ट दैट, बिकॉज सबके साथ होता है, इट्स नॉट ओनली विथ यू. सो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इनिशियली टाइम ज्यादा लगेगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उस क्वेश्चन जब सॉल्व करते जाओगे, उस टाइप का क्वेश्चन आगे जाएगा, आपका टाइम रिड्यूस होते जाएगा एंड यू विल बी फैमिलियर. एंड जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली टाइम कॉन्स्टेंट है, सो लाइक व्हाट यू कैन डू इज, आप ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन. एक सेट पे कोई भी उठाओ, कोई भी पास्ट पेपर, एंड वो एक पर डे सॉल्व करते जाओ. सो start from the ACCA practice platform, complete it first, and along with that please use examiner report. उससे पता चलेगा कि स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. So you will be aware in the start that यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है. So you will avoid those mistakes in your upcoming exam. So these are the tips. So I hope this will be useful. In case you have any doubt, query, please feel to message me, or you can comment in the comment box. So thank you so much.